आप साइंटिफिक टर्न इन एक सॉफ्टवेयर है, आप उस रेजोल्यूशन को भी डालिए और मेरी अमेंडमेंट्स को भी डालें। अगर वो बोले ये सेम है, मैं माफी मांगूंगा। आपके रेजोल्यूशन में तो 370 का नाम ही नहीं है, वहां तो एप्लीकेशन का 2019 का नाम नहीं है, रिऑर्गनाइजेशन एक्ट का नाम नहीं है। आपका है कि शादी है, शादी का कार्ड है, न उसमें दुल्हन का नाम है न दुल्हे का नाम है। मैंने तो बाज़ाब्ता आपको 370 का बोला है। यू कांट कंपेयर। देखिए आप पढ़े लिखे ऑनरेबल मेंबर मैं आपसे बताना बात करो, आप बात करो। ये उनके और स्पीकर के दरमियान है, आपकी बात करने की जरूरत नहीं है, आपके बात करने की कोई जरूरत नहीं। वही मैं कह रहे हैं, वही मैं कहने जा रहा हूँ। सवाल है जब हमने कैंपेन में तो आप 370 बोलते थे, तो इलेक्शन जीतने के बाद ये स्पेशल स्टेटस कहां से आ गया? इसकी तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए आप, स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है? यूटी ऑल्सो, इट कुड बी यूटी। स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था वो इनकॉर्पोरेटेड 370 में है। बस 370 वो दफा है एंड 35A जिसका आपने जिक्र किया है। अब सुन लीजिए ना, मैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो Special status does not mean Article 370. Special status does not cover what has been done to us on 5 August 2019. It does not cover Reorganization Act. Special status could even be a UT. Are we fighting for a UT? Special status is a very broad. मुझे बताइए, it does not necessarily mean 370. Anyway, but what is the harm in putting it in front of the House? recent occurrence को किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे, मुझे समझाइए। It is not a matter of recent occurrence. When I say that rigging of 87 brought in violence, that those 1 lakh people who have died. Sir, let me speak, sir. Honorable Speaker, sir, I want to speak, sir. Are you telling me that you don't care about the people who are in the ground? It's not recent. Sir, it's not recent that you pass a rule on Public Safety Act. All I am saying is that it should be, as has been mentioned in your manifesto, that you should make it that in your जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो ये स्पीच था, you should make it a point that at least you have a desire, that you have an intention to repeal Public Safety Act. How is it that repealing Public Safety Act at the time of elections is within the ambit of law and comes outside the ambit of law the moment you win? You can't do it. For the present, you cannot do it unless the statehood is restored. It cannot be done. It cannot be done till that time. That is why I have disallowed it. Now, जो आपके जो हमने परमिट किए हैं, जो एडमेंट्स किए हैं, उनको मैं पढ़ा हुआ तस्वीर करता हूँ। अब मैं इसके बारे में अगर आप कहते हैं, एक सेकंड सजाद साहब, अगर आप कहते हो वेरिफिकेशन इज रिलेटेड टू होम, आई एग्री, पुलिस इज नॉट आवर डोमेन, बट पुलिस डजंट डील विद टेररिज्म ओनली, पुलिस डील्स विद नॉर्मल पुलिसिंग जिसमें क्राइम भी आता है। 1, 2, जो वेरिफिकेशन का मामला, इट्स अबाउट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड मेड under rules by UT. You appoint, we appoint, and who impedes? Another area. Verification, जो rule है, it doesn't qualify. वेरिफिकेशन किस चीज की होती है? वेरिफिकेशन इंसिडेंट कैरेक्टर की होती है। कौन देखेगा? Rules, UT government. UT government will have to, GAD will have to make rules. GAD will have to make rules. For discussion be, if we want a discussion on police, I said that barring terrorism, जितनी भी पुलिसिंग है, that can be brought to this forum for discussion. 1, 2, जब वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के रूल्स जो है, they are so stringent.
even court intervention is not allowed. कोर्ट ने फैसला किया, वेलकम से एक कोर्ट का फैसला आया, रिसेंटली आया कोर्ट का फैसला। मुझे लगता है कि जो आपके अप्रहेंशन से वो दूर हो गए होंगे कोर्ट के फैसले। Regarding police verifications, sir, I have been a victim of police verification. When I went for a passport in 2012, एक तो होता है आप अप्लाई करते हैं फिर रिजेक्ट करते हैं. I was banned from applying. I was under pact that before you apply you have to seek permission. But this form of collective punishment is only in the state of J&K. हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो बाजू के पंजाब में रूल है वही हमको भी करें. आर वी नॉट इक्वल सिटीजन ऑफ इंडिया? आपके कंसर्न जो है सर, देखिए मैं आपके कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ. देखिए लोन साहब आपके कंसर्न को मैं अप्रिशिएट करता हूँ. अब सुन लीजिए, हम भी गए, वी हैव गॉन टू द कोर्ट, सर वहां स्पीकर साहब वहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, पहले आप उनको बताइए. आप तशरीफ अच्छा. Sir, we have gone to the court. There is not a single piece of legal evidence on the basis of which they can deny police verification because he is related to someone. It's all word of the mouth, and unfortunately it started probably in 1996 जब आप लोग थे. खैर कोई बात नहीं, we will not go into that. We need to discontinue it now. And we can put it there that is our intention, that our children should not be punished for something that their father has done, or their brother has done, or their cousin has done. It is primitive. How can we allow it? And how can this assembly keep quiet? Just tell me. हम कैसे चुप कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को किसी जगह सिलेक्ट होते हैं, वो मेहनत करते हैं, और आप बोलते नहीं आपके चाचे का, बेटे का, ताए का कोई जो है वो कभी गया था. उसमें तो और नहीं आया जजमेंट से. दैट्स अ सिंगल केस जो वो नहीं आया जजमेंट से. सर आपको नहीं सुनना है. आई वॉक आउट बिकॉज यू हैव नॉट. इट विल अप्लाई टू अदर केस ऑल्सो. अब हो गए ये क्लोज, इट इज क्लोज हो गया. मैंने रूलिंग दे दी. आई कैन नॉट अलाउ इट.